સુરત શહેરમાં વાલીઓ માટે લાલ બત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો। 2 વર્ષની નાની બાળકી બીજા માળેથી નીચે પટકાતા મોતને ભેટી। સચિન પાલી ગામની ઘટના। માસૂમ બાળકી એસવી અરુણ ચૌહાણનું મોત થયું। રમતા રમતા ઘરના બીજા માળેથી બાળકી નીચે પટકાઈ હતી। ગંભીર ઈજાના કારણે પાડોશી તાત્કાલિક બાળકીને હોસ્પિટલ લઈ ગયા। સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં બાળકીની મોત। ફરજ પરના હાજર તબીબોએ બાળકીને મૃત જાહેર કરી। બાળકીના મોતને પગલે પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો। માસૂમ બાળકોને એકલા રમવા છોડી દેતા માતા પિતા માટે લાલ બત્તી સમાન ઘટના સામે આવી। વધુ તપાસ હવે સચિન જીઆઈડી પોલીસે હાથ ધરી છે। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंडिया टीवी, सूरत। नाम बोलो। मेरा नाम अरुण कुमार चौहान है। आपका रहने का कहाँ है? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सूरत में कहाँ पे रहते? सूरत में 472 नंबर कैन्यू कैलाश नगर में। क्या घटना बनी थी आपके बच्चे की? मेरी बच्ची खेलते हुए रेलिंग के सामने से गिर गई नीचे। कितने साल की बच्ची 2 साल की थी। ये किस तरह की कब घटना हुई? ये सुबह 9 बजे घटना हुआ। फिर कौन सा हॉस्पिटल ले गए? वहाँ पे एक हमारा छोटा सा हॉस्पिटल है, सिविल नाम का है पाली गाँव में। वहाँ ले गए तो बोला कि नहीं अब सिविल लेके जाओ, तो फिर वहाँ से तुरंत सिविल यहाँ लेके आए। तो फिर यहाँ पे सिविल में लाए। फिर क्या हुआ? सिविल में लोग किस मतलब सांस और धड़कन जो है कि चालू करने का प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन अंततः जो है 2 बजे तक बोल दिए कि अब नहीं हो पाएगा। आप क्या काम करते हैं? मैं वायरमैन इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। कितने सालों से? मैं जो है कि 2022 से सूरत में।